took place in this hall. The Indian Constitution was also framed in the Central Hall. The Central Hall is considered a very important part of the Parliament building. This is where the Indian Constitution was drafted. The GST document that runs into 213 pages is expected, as Union Finance Minister Arun Jaitley earlier had said, is going to spur growth, competitiveness, indirect tax simplification and greater transparency. A very, very historical moment also for this country. The fact that it's going to GST is a beginning of a new era in terms of economic integration, economic revolution, as many are calling it. But will this really also, much depends on the implementation of GST. First 6 months of GST implementation will be very crucial. Senior members of Parliament invited in this event. Many senior dignitaries are also present in this function. हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त गेट नंबर 4 से संसद भवन परिसर से मौजूद हैं। मनोज, क्या कुछ देखा आपने, क्योंकि सेंट्रल हॉल से जो तस्वीरें आ रही हैं पूरा भर चुका है, कुछ ही समय के बाद संभवतः कार्यक्रम शुरू होगा। एक बड़ा दिन, एक ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं। जी बिल्कुल अनुराग जी, एक ऐतिहासिक दिन है और 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में जैसा नजारा रहा होगा, कुछ ऐसा ही सेंट्रल हॉल का नजारा है और खास तौर पे होना भी चाहिए, क्योंकि आज देश की आजादी के बाद सबसे बड़ा जो आर्थिक कर सुधार है वो होने जा रहा है। देश एक ऐसा महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रहा है जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर, हमारी कर प्रणाली पर पड़ना है। आपने जैसा बताया कि तमाम बड़े नेता इस समय संसद भवन पहुंच रहे हैं और सांसदों में जो सत्ता पक्ष के सांसद है खासतौर से उनमें खासा उत्साह है इस क्षण को लेकर, क्योंकि जीएसटी को पारित कराने के लिए जिस तरह से मोदी सरकार ने एक सहमति के साथ इसका रास्ता निकाला, उससे एक उत्साह का माहौल है। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष ने आज खासतौर से कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट और दूसरे दलों ने इससे दूरी बनाई है, उसे लेकर कुछ थोड़ी सी निराशा जरूर है। और सत्ता पक्ष के सदस्यों का कहना यह था कि अच्छा होता कि आज कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सदस्य भी इस अवसर पर भाग लेते, क्योंकि यह विषय जो है वो किसी एक दल का नहीं है, बल्कि देश का है, देश की अर्थव्यवस्था का है, लोगों की भलाई का है, कर प्रणाली को बेहतर बनाने का है। तो एक प्रकार का यहां पर यह नजारा दिख रहा है। अब से कुछ देर में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, उसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी पहुंचेंगे और तब सीधा प्रसारण जो संसद के सेंट्रल हॉल से किया जाएगा, वहां से सीधी तस्वीरें हम आप तक, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है अनुराग जी कि ऐसा जीएसटी एक ऐसा बिल है जो संसद से पारित हुआ कानून है, जो आज सेंट्रल हॉल में देश की आजादी के बिल्कुल जश्न की तरह जिसको एक देश में लागू किया जा रहा है। जी अनुराग, बिल्कुल ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि संसद भवन में जिस बिल को, जिस विधेयक को पास किया, उसको लागू करने की एक विधिवत कार्यक्रम संसद भवन के केंद्रीय कक्ष से हो रही है। मैं आता हूं आपके पास मनोज, लेकिन एक सवाल थोड़ा विपक्ष की राजनीति को लेकर, क्योंकि कांग्रेस इसका पार्ट रही है, उसने भी जिस तरह से इसको समर्थन, जिस तरह से लागू कराने की कोशिश की, कुछ उनका विवाद था, कुछ पर्सन्स को लेकर एक था उनका, इस बात को बायकॉट करना क्या आपको लगता है कि अवॉइड किया जा सकता था और ये फंक्शन और ग्रैंड होता? कांग्रेस तो पहली बार जीएसटी बिल पहले लेके आए और अभी भी सपोर्ट किए। कर अफसोस की बात यह है कि आज के दिन उन्हें बॉयकॉट कर रहे हैं। हम भी अपोजिशन में हैं। कल इलेक्शन में शायद हम बीजेपी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ाई करते हैं, लेकिन ये जो है पॉलिटिक्स अलग रखना, क्योंकि यही जो है, यही कांग्रेस जो है जीएसटी बिल लाए है और हम भी अपोजिशन में है, लेकिन ये जो है एस्पिरेशन है, ये जो होप है, देश का होप है, कोशिश करेंगे, शायद सक्सेस होगा और जरूर इसका सपोर्ट अगर कांग्रेस दिए तो देश पूरा खुशी रहेंगे। Right, and as Prime Minister Modi last year had said that राजनीति से उठकर राष्ट्रनीति की तरफ देखें, politics must not override policy. Yeah. From that perspective, do you see that GST has that potential to really reshape $2 trillion Indian economy? I think so. GST has that potential to relook at the whole political landscape, and this is the opportunities where every party can rise above politics, and it's not for the benefit of the ruling party, it's for their own benefit, including our party. We are in the opposition, but this is the opportunity for us to rise above politics, and we hope every party does that.
Right. Dr. Chaturvedi, you know, when we talk about the profit and loss component of the GST, there are many sectors which are watching the implementation of GST very, very closely. What, in your opinion, will which sectors you think will really have a major, you know, sort of shake-up because of the implementation of GST, or the sectors which are actually going to have a smooth ride with the implementation of GST? See, there are certain sectors which are completely out of the purview. If you see more or less quite a few states. Right, you can see Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan arriving, being greeted by Finance Minister Arun Jaitley, and also being attended by Lok Sabha Secretary General Anup Mishra. Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan will also wait for the arrival of President Pranab Mukherjee. He'll be received and later will be escorted till the Central Hall, which is conducting this huge event, a mega event, the launch of GST. Right, sir. Yeah. So if you see more or less 40% of the revenue of most of the states is from petroleum-based products, and this has been kept out. You have also kept out electricity, you have kept out construction and other sectors. So there are 4 broad sectors which are completely out of your purview. As a result, around 50% of the revenue of the state is out. So the losses would be on the remaining 50% or 60%. So the variability in terms of revenue returns to specific sectors and states would not be very high. And in any case, the GST Council has worked out several different formulations where compensation would be ensured. As a result, the gaps in the tax returns and revenue, particularly if economic activity or production is not happening in a specific state, or it's happening in that specific state. So in either scenario, the compensation would take care of the revenue foregone through a globalized system. Okay. Now, in the last 1 year, we have seen a big, major focus on the whole Digital India initiative. In fact, even the GST will revolve much around the digital literacy, the technological revolution it's going to really bring in. From that perspective, one looks at the present level of digital literacy. You know, we've moved from financial literacy to digital literacy. How far do you feel that the sort of empowerment machinery, empowerment mechanism which must exist in the system as of now really is there for the GST implementation? Theoretically, it's very, very possible. We've seen what happened during the demonetization side. There are some villages who went digital. There are some cities who could not go digital. So it's nothing to do with level of literacy, or it's to do the level of awareness and the local governments pushing for it. Right. And I think it's theoretically altogether possible. And GST is yet another tool to make it go forward. Okay. But, डॉक्टर सचिन, एक सवाल कि आपको याद होगा कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट क्वार्टर आया था, उसके बाद जो भी जो ग्रोथ रेट है वो 6.1% आई थी, तब विपक्ष ने एक चिंता जताई थी। देखिए, हमने तो कहा था आपसे कि इसका इनिशियल इंपैक्ट नेगेटिव आएगा। क्या जीएसटी का इनिशियल इंपैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर में कुछ नेगेटिव हो सकता है? और क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी इस तरह की न्यूज आती है कि देखिए जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उसमें कुछ सेटबैक आया है। देखिए, एक बड़ा कन्विक्शन के साथ ये कदम उठाया गया है, और उसमें इतने बड़े पैमाने पर काम होने की संभावना है। आपकी रिपोर्ट ने बताया कि 5 करोड़ तक जीएसटी के जो इनवॉइसेस होंगे वो सिस्टम के एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। तो उस बड़े कदम के साथ में कुछ वेरिएशन होगा, जैसा कि हमें खुद एप्रीहेंशन है कि कई चीजें ऐसी क्लासिफाई हो गई हैं अलग अलग ग्रुप्स में। आपने बताया फर्टिलाइजर को वापस कम दर में लाके रखा गया है। ये बदलाव लगातार होते रहेंगे और उसका कुछ असर होगा। ये भी पॉसिबल है कि इस क्वार्टर में उसका इम्पैक्ट ग्रोथ के ऊपर भी हो, लेकिन इससे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। Right, so हम सही दिशा में हैं। It's a packed central hall. Senior ministers of the government they're waiting for the arrival of Pranab Mukherjee. You can see on your television screens
Simrat Kaur. Also, earlier images were being shown of senior BJP leader Lal Krishna Advani, also Minister of External Affairs Sushma Swaraj there in the event. Former Prime Minister H.D. Devegowda will also be sharing the dais with Prime Minister Modi and President Pranab Mukherjee, Nitin Gadkari there. So Jitendra Singh, External Affairs Minister Sushma Swaraj. So all the senior ministers present in the Central Hall waiting for the big launch of GST at midnight. जी बिल्कुल, और चूंकि सभी लोग पहुंच चुके हैं और हमारे साथ मौजूद विश्वजीत रेड्डी साहब को भी वहां पर जाना है। बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, आपको वहां जाना है, लिहाजा आपको इजाजत है। लेकिन हम अपने दर्शकों को लगातार ये विजुअल्स दिखा रहे हैं, अब जा सकते हैं बहुत हम हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि चूंकि सेंट्रल हॉल लगभग भर चुका है, तमाम केंद्रीय मंत्री, सांसद, गणमान्य व्यक्ति, तमाम राज्यों के वित्त मंत्री भी इस कार्यक्रम में वहां पर पहुंचे हैं और अब सिर्फ राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है, चूंकि वो वहां पर कुछ ही समय के बाद पहुंचने वाले हैं और उसके बाद इस कार्यक्रम की आधिकारिक तौर पर शुरुआत होगी और मध्यरात्रि को ठीक 12 बजे राष्ट्रपति नई कर प्रणाली को यानी कि जीएसटी को लागू करेंगे। लेकिन इस देश में जो चिंता है वो संभवतः कल से कुछ दूर होना शुरू हो जाएगी कि क्या चीजें सस्ती हुई हैं, क्योंकि इस देश का आम नागरिक संभवतः इस बात को लेकर ज्यादा परेशान है कि जीएसटी एक नई तरह की कर व्यवस्था अगर लागू होती है तो उससे चीजें सस्ती होंगी या फिर महंगी होंगी। मध्यम वर्गीय या फिर जो गरीब तबका है वो इस बात को जानने में, समझने में लगा रहा पिछले कुछ हफ्तों और महीनों में कि आखिरकार चीजें सस्ती हो रही हैं या नहीं, कौन कौन से सेगमेंट में कौन कौन सी चीजें सस्ती होंगी, किस तरह का असर पड़ेगा। हालांकि जानकार इस बात को मानते हैं कि अभी तक पूरी स्थिति साफ तब संभवतः तब हो पाएगी जब ये प्रणाली व्यवस्था लागू की जाएगी। और आज रात से चूंकि लागू होनी है, सरकार ने इस तरह का फैसला किया है, लिहाजा कल के बाद जो कुछ भी स्थिति है वो सामने आना शुरू होगी। कई तरह की चिंताएं, कई तरह की कंप्लेन भी आएंगी कि आखिरकार इसमें लागू करने में, इनवॉइसेस को भेजने में, उनका ऑनलाइन सबमिट करने में किस तरह की दिक्कतें आती हैं। लेकिन अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला सरकार की तरफ से, और जैसा कि हमने आपको बताया कि तकरीबन 17 साल की मेहनत के बाद, तमाम सरकारों की और मंत्रियों की मेहनत के बाद आखिरकार जीएसटी लॉन्च होने जा रहे हैं। एक इस तरह की व्यवस्था जो कि इस देश में एक देश, एक बाजार और एक तरह का कर प्रणाली, एक तरह की कर व्यवस्था लागू होगी। संसद भवन का केंद्रीय कक्ष सेंट्रल हॉल एक ऐतिहासिक एक मौका, और सेंट्रल हॉल वैसे भी गंवा रहा है और इस बात को लेकर भी ये बात प्रचारित की जा रही है कि एक ऐसा मौका है कि जब 1947 में आजादी की घोषणा मध्यरात्रि में इसी परिसर, इसी भवन से की गई थी, जब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी भारत की आजादी की और ट्राइस्ट विद डेस्टिनी के तहत उसी सेंट्रल हॉल में, उसी केंद्रीय कक्ष में एक तरह की नई व्यवस्था, यानी कि देश की आजादी के बाद से एक बड़ा कर व्यवस्था में बदलाव है और कह सकते हैं कि आखिरकार एक करों के, टैक्सों के उस जंजाल से आजादी है। बहुत से टैक्स को इसमें तकरीबन, ये विजुअल्स आप देख रहे हैं, कुछ ही समय के बाद संभवतः राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचेगा। केंद्रीय मंत्री श्री अनंत कुमार दिखाई दे रहे हैं। Right, so Parliamentary Affairs Minister Anant Kumar, Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan, Secretary General Lok Sabha Anup Mishra, Finance Minister Arun Jaitley, waiting for the arrival of Prime Minister Narendra Modi and President Pranab Mukherjee. A midnight joint parliamentary event is celebratory in nature. The first time that a joint parliamentary event at midnight would not really be commemorating a historic event of the past, but rather welcoming an economic change for the country's future. Nearly 1,000 people are witnessing the launch of what is being called the biggest tax reform since independence, and that's the arrival of Prime Minister Narendra Modi. The mind behind the launch of goods and services tax, bringing in the centre and states together on one page to implement, really mooting the whole Team India concept, being greeted by Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan, Finance Minister Arun Jaitley, Parliamentary Affairs Minister Anant Kumar. They're now waiting for the arrival of the President Pranab Mukherjee. Interestingly, President Pranab Mukherjee earlier, when he was the Finance Minister, had piloted the first constitutional amendment bill to bring in GST
GST in 2011 when he was finance minister with the previous UPA government, and now as the president he will be marking this historic event with the formal passage of GST, when GST will be implemented all across the nation. One tax, one nation. Though in reality it's still not one tax, there are 4 different tax slabs. But again, a historic moment for everybody. As you saw, it's a packed central hall. All members of parliament are there, chief ministers and state finance ministers, senior ministers of the NDA government. On the other side, the opposition parties like the Congress, the left, the TMC, the RJD, the DMK are boycotting this event. Finance Minister Arun Jaitley earlier had said that the whole idea of a grand function in the central hall was to mirror the contributions being made by different parties and the states in bringing the new revolutionary tax regime. जी हाँ, तो जीएसटी या कहें कि एक देश में एक तरह का कानून मसला वस्तु और सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कि लागू होने का नहीं है। ये अच्छा लगता है इसमें पूरे सुनना कि पूरे देश में एक तरह की चीज। उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी भी पहुंचे हैं, उनका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली मौजूद हैं, लोकसभा की स्पीकर श्रीमती सुमित्रा महाजन, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा श्री अनूप मिश्रा जी भी मौजूद हैं और इंतजार किया जा रहा है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के आने का, जिनके स्वागत के लिए तमाम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। ये सेंट्रल हॉल का दृश्य जहां पर तमाम मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, राज्यों के वित्त मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण, क्योंकि मसला दरअसल एक पूरे देश में एक चीज एक ही दाम पर मिलेगी। देश में 2 तरह के टैक्स अब नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन जितना ये सुनने में अच्छा लग रहा है या फिर एक बड़ा मौका है, लेकिन इसमें जितने की बाधाएं आई हैं वो भी अपने आप में, ये सफर 17 सालों में भी बड़ा रोमांचकारी रहा है। जिस तरह की बहस संसद भवन में देखने को मिली, सुनने को मिली, वो भी अपने आप में बड़ी दिलचस्प रही हैं। इसको लेकर जिस तरह का एक गतिरोध बना रहा, बीजेपी, कहा यह जाता है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब इसका विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस की तमाम कोशिशों के बाद भी उस समय पास नहीं हो पाया। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसने न सिर्फ तमाम विपक्षी पार्टियों को मनाया, उनकी बातों को माना और संभवतः इस नतीजे पर पहुंची कि देश में जीएसटी लागू हो पाए। एक समय तो ऐसा भी था जब लग रहा था कि यह मामला और लंबा खिंचेगा, पता नहीं तमाम पार्टियां राजी होंगी नहीं होंगी, अगर राजी होती हैं तो राज्यों की अपनी जो चिंताएं हैं वो कहां तक दूर होती है। तो एक तरह का तमाम बाधाओं को पार करते हुए आज यहां पर पहुंचे हैं, लिहाजा प्रधानमंत्री ने सोचा कि इसको भव्य तरीके से लॉन्च किया जाए। और चूंकि अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम इसलिए भी है क्योंकि अब नई तरह की कर व्यवस्था हो जाएगी। एक नई आदत संभवतः व्यापारियों को भी डालनी होगी कि किस तरह से व्यापार किया जाए, किस तरह से टैक्स जमा किया जाए, किस तरह से ऑनलाइन चीजों को सबमिट किया जाए, ताकि देश में टैक्स का ढांचा, टैक्स नेट बढ़ सके। सरकार की आमदनी होगी, वो सरकार की अगर आमदनी होती है तो देश के विकास के लिए काम आता है। मुख्य तौर पर यह बात समझ में आती है। कुछ जो चिंताएं हैं लोगों की वो इसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर हैं। चिंताएं इस बात को लेकर हैं कि अगर नई कर व्यवस्था जो लागू होती है, 4 तरह के स्लैब हैं या कहें कि जो 5 तरह के स्लैब हैं, 5, 12, 18, 28 या उससे ज्यादा के, उसमें आने के बाद जो आमतौर पर चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उसमें किस तरह का बदलाव आएगा, चीजें सस्ती होंगी या महंगी होंगी, इसको लेकर कुछ चिंता है, जिसको लेकर कुछ लोगों ने विरोध भी किया है। लेकिन तमाम विशेषज्ञ हमारे साथ जो लोग मौजूद रहे इस डिस्कशन के दौरान, डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद रहे, उन्होंने भी यह बात मानी कि कुछ हिकअप्स हैं, कुछ चिंताएं हैं और संभवतः उसको दूर करने के लिए जीएसटी काउंसिल है, उन चिंताओं को दूर किया जाएगा। उस तरह की टीथिंग प्रॉब्लम्स आने वाले समय में दूर की जाएंगी और जीएसटी को समझने का हालांकि जो गुणाभाग है वो काफी पेचीदा वाला रहा। लोग यही पूछते रहे कि कौन सी चीज सस्ती हो रही है, कौन सी चीज महंगी हो रही है, खाने, खुले अनाज, गुड़, दूध, अंडे, नमक पर किस तरह की चीज होंगी, दवाइयों पर क्या होगा, किस चीज को एग्जम्पशन मिली है, किस चीज को नहीं मिली है। सरकार आखिरी मोमेंट पर, अब से कुछ समय पहले जैसा हमने आपको बताया था कि 18वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में फर्टिलाइजर को लेकर भी एक कदम लिया गया कि उसको 12% के स्लैब से घटाकर 5% पर लाया गया, यानी कि किसानों का भी ध्यान रखा गया। Right, so GST will actually subsume more than 17 central and state taxes, and as Anurag was just pointing out, at the stroke of midnight of June 30th and July 1st, India will awake to one country, one tax regime. GST is another historic tryst with destiny
for India. In fact, there are many benefits being cited of GST. The fact that it's going to check tax evasion, it's expected to propel revenue growth, it's expected to increase the spending capacity of the centre and state government. So revenue is being seen as a major factor. GST will also have a positive impact on GDP, and that's the arrival of President Pranab Mukherjee. And he will be making the speech from the same podium where India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru gave his historic Tryst with Destiny speech to declare India's independence at the midnight of August 14-15. He's being greeted by Parliamentary Affairs Minister Anand Kumar, Finance Minister Arun Jaitley, Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan, Prime Minister Narendra Modi, Chairman Rajya Sabha Hamid Ansari, and he's now heading towards the Central Hall. जहां जिन लोगों का इंतजार था, जिन गणमान्य व्यक्तियों का इंतजार था, सभी पहुंच गए हैं। अब सेंट्रल हॉल की तरफ, अंदर की तरफ रुक किया है। ये अंदर की तस्वीरें जहां पर पहले से मौजूद ये पूरा हॉल एक तरह से कहें कि खचाखच भरा हुआ इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह होने का, जहां पर सांसद, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री राज्यों के पहले से मौजूद हैं। और अब से कुछ ही समय के बाद, तकरीबन 1 घंटे के बाद, मध्यरात्रि के वक्त पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के जरिए जीएसटी को लॉन्च किया जाएगा। जीएसटी की व्यवस्था आज रात मध्यरात्रि से लागू हो जाएगी। और जैसा कहा कि एक देश में एक बाजार और एक तरह की कर व्यवस्था होगी। एक देश में एक वस्तु की कीमत 2 अलग अलग जगह पर नहीं हो सकती। इस तरह का जो व्यवस्था चली आ रही थी आजादी के बाद से, उसमें बदलाव होगा और यह अपने आप में एक बड़ा फैसला है। हालांकि अगर इसके इतिहास की बात की जाए तो सबसे पहले 1994 में वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स के संदर्भ में जीएसटी का उल्लेख अमरीश बागची की रिपोर्ट के हवाले से किया गया था। पर इसकी नींव अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में रखी। उनको इस बात की सलाह उनकी इकोनॉमिक एडवाइजरी बोर्ड ने दी थी। यह ध्यान रखने लायक बात यह भी है कि उस वक्त तक देश ने न तो उस तरह के कंप्यूटर, उस तरह की इंटरनेट की व्यवस्था थी, लेकिन उस वक्त भी इस बात को माना गया कि इस व्यवस्था को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएं और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया था। बाद में यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए और आज जाकर एनडीए की सरकार ने, यानी कि 2014 में आई सरकार ने इस दिशा में बहुत तेजी से कदम उठाए, चीजों को लागू करवाया और विपक्षियों की बात भी मानी। Right, it's President Pranab Mukherjee heading towards the Central Hall. Pranab Mukherjee, as the former finance minister, also has his contribution in the GST. He had piloted the first constitutional amendment bill to bring in GST in 2011 when he was finance minister with the previous UPA government. So we're sure that he had his own element in the GST, and it's a great moment for him as well when he will be speaking about the big launch of GST. July 1st, tomorrow at the stroke of midnight, GST will be implemented across the nation, and it is not just a victory of a party or government, it is a victory for democratic ethos of India and a victory for everyone. जहां तमाम राज्यों, तमाम पार्टियों को इनवाइट किया गया था, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी
His Excellency the President, Shri Pranab Mukherjee, the Vice President, the Honorable Shri Hamid Ansari, the Prime Minister, the Honorable Shri Narendra Modi ji, the Speaker of the Lok Sabha, the Honorable Srimati Sumitra Mahajan, a former Prime Minister and senior leader of the country, Shri H.D. Devagowda ji, everyone from the members of the Council of Ministers to the ministers of the state governments, officials, members of Parliament, and other dignitaries assembled on this historic occasion. We are assembled today for an important moment in the journey of our great nation. We are in the process of making history with the launch of the Goods and Services Tax. At the midnight hour, we will be launching one of India's biggest and most ambitious tax and economic reforms in history. The GST may be a destination tax, but for India it will begin altogether a new journey. It's a journey where India will awake to limitless possibilities, to expand its economic horizons and loftier political visions. The old India was economically fragmented. The new India will create one tax, one market, and for one nation. It will be an India where the center and the states work together cooperatively and harmoniously towards the common goal of shared prosperity. It will be an India which will write a new destiny. The GST is an important achievement for the whole country. The unanimity of support for the Constitution Amendment and the consensus-based work of the GST Council highlights that India can rise above narrow politics and speak in one voice for larger national interest. The quality and the maturity of the debate leading to the Constitution Amendment and in the GST Council underscores this point, that India can collectively think and act with maturity for a broader purpose. The Constitution says that India is a union of states. The union is strong if both the states and the center are strong. That is the real meaning of cooperative federalism. While enacting the GST, neither the center nor the states give up their sovereignty. They have pooled their sovereignty to make joint decisions on indirect taxation. In a large and complex federal system of multi-party democracy, with the center, 29 states, 2 union territories with legislatures, and a wide divergent interest, we have implemented a constitution amendment and brought in a large tax reform, displaying a high point of Indian politics. We have done this at a time when the world is facing slow growth, isolationism, and the lack of structural reforms. With the GST, India has showcased that these forces can be overcome through the display of inclusion, openness, and boldness. For this, all members of Parliament, the state governments, all political parties, state finance ministers, and a dedicated team of officers of the center and the state governments who contributed to this deserve to be appreciated and thanked. राष्ट्रपति जी, ये जो यात्रा थी, आप इसके सबसे प्रमुख गवाह हैं कि लगभग 15 वर्ष से पहले आरंभ हुई थी। NDA 1 सरकार ने एक समिति की रचना की थी, जिसके अध्यक्ष श्री विजय केलकर आज इस सभागार में मौजूद हैं। उन्होंने सन 2003 में एक ऐतिहासिक रिपोर्ट दी थी कि इस देश के अंदर
एक वैल्यू बेस्ड टैक्सेशन जीएसटी के नाम से आरंभ किया जाए। 2006 के बजट में यूपीए सरकार ने घोषणा की थी कि 2000